हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है हिस्ट्री की, चैप्टर 10 आपका उपनिवेशिकवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में पृष्ठ 257 से 274 तक है। ठीक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा 12th क्लास का टॉपिक है और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें। ठीक है, तो इसके हम वन लाइनर पढ़ेंगे। तो चार्ल्स वॉलिस ने बंगाल में istmraaree या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली की स्थापना की 1993 में की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाए। जमींदारों को सैन्य टुकड़ियां समाप्त कर दी गई। जो मतलब जमींदारों की जो सैन्य टुकड़ियां थी, जमींदारों के लिए जो सैन्य टुकड़ियां दी जाती थी वो समाप्त कर दी गई। फिर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जमींदारों से स्थानीय से न्याय और पुलिस की शक्तियाँ छीन ली गई। जमींदारों की कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। जमींदार प्राय समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, जिसके निम्न कारण थे। प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। स्थायी बंदोबस्त की यह व्यवस्था 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि के उपज की कीमतें बहुत नीची थी। उनकी शक्ति राजस्व एकत्र करने व उसके प्रबंधन तक ही सीमित थी। राजस्व का समय पर भुगतान न करने पर सूर्यास्त विधि के अनुसार जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, जिससे बचने के लिए वे निम्न तरीके अपनाते थे। फिर इसके बाद देखिए, जो निम्न तरीके थे वो क्या थे। जमींदारों को घर की महिलाओं के नाम करा देते थे। ठीक है, जमींदारी जो होती थी घर की महिलाओं के नाम कराते थे। अपने एजेंटों के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ किया करते थे। पुराने जमींदार के लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे, या पुराने रियायत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। इस प्रकार नए खरीदार को ज़मीन पर का कब्जा ही नहीं मिल पाता था। जानबूझकर ऊंची बोली लगाते थे तथा बाद में खरीदने से इनकार कर देते थे। फिर जोतदार धनी किसान होते थे, जो जमींदारों का विरोध करते थे। जमींदारों की तुलना में जोतदारों का ग्रामीण किसानों पर अधिक प्रभाव होता था। 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के तरीकों की निंदा की गई थी, मतलब कि आलोचना की गई थी। पहाड़ियाँ राजमहल पहाड़ी के जंगलों में रहते थे, झूम खेती करते थे और संग्रह करते थे। पूरे प्रदेश को वे अपनी निजी भूमि मानते थे। ठीक है, पहाड़िया और स्थानीय लोगों में प्राय संघर्ष होता था और वे गांवों पर हमला करते थे। ठीक है, अंग्रेजों ने उनका क्रूरता से दमन करने का प्रयास किया, किंतु वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज कलेक्टर पहाड़िया लोगों के सरदार को शांति बनाए रखने के लिए प्राय धन दिया करते थे। 1780 के आसपास संथाल आदिवासियों को अंग्रेज बंगाल में बसाने लगे और संथालों के लोगों को दामिन एक कोह के कहा जाता था। फिर पहाड़िया और संथालों के बीच संघर्ष को कुदाल और हल का संघर्ष कहा जाता था। ठीक है, और इसके बाद बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। 1855 से 56 में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। सिंधु मांझी संथाल में विद्रोह का नेता था। संथालों के विद्रोह के कारण थे संथालों की जमीन पर सरकार द्वारा भारी कर लगाना, संथालों द्वारा लिए गए कर्जों पर ऊंची ब्याज पर वसूलना, कर्ज अदा न करने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर लेना। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार का एक ताकतवर हस्ती थे, क्योंकि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक उनके पास जमीनों के बड़े बड़े क्षेत्र थे। इनमें से कई तो 1000 एकड़ तक फैले हुए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के व्यापार पर भी उनका नियंत्रण था। इस प्रकार उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके पश्चात जोतदारों की जमीन का बड़ा भाग
बटाईदारों द्वारा जोता जाता था। वे जोतदारों को फसलों के बाद उपज का आधा हिस्सा देते थे। गांव में रहने के कारण जोतदारों ग्रामीण वासियों पर सीधा नियंत्रण रखते थे, जबकि जमींदार शहरों में रहते थे। जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमीन लगान को बढ़ाने का विरोध करते थे तथा जमींदारों अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। अपने ऊपर निर्भर रियायत को अपने पक्ष में वे जोतदार एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारी नीलाम हो जाती थी और प्राय जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। इस प्रकार उत्तरी बंगाल में जोतदार जमींदारों से भी अधिक शक्तिशाली थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हल और कुदाल की लड़ाई बहुत लंबी चली। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेज़ों ने राजमहल पहाड़ी के जंगलों को साफ करवाना प्रारंभ किया, क्योंकि वे वहां खेती करवाकर अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहते थे। अंग्रेज जंगल इसलिए भी साफ करवाना चाहते थे क्योंकि वे वनवासियों को असभ्य, क्रूर, बर्बर और उपद्रवी मानते थे। 1770 के दशक में अंग्रेज़ों ने राजमहल पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोगों को निर्मूल कर देने की नीति अपनाई और बाद में पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देकर अपने व्यक्तियों को चाल चलन ठीक रखने का उत्तरदायित्व सौंपा, परंतु इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। इन परिस्थितियों में पहाड़ियों लोगों ने अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई जारी रखी और पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए और वे प्रत्येक गोरे व्यक्ति को अपना दुश्मन मानने लगे। फिर इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ी की तराई में संथाल आदिवासियों को बसाना प्रारंभ कर दिया। संथाल लोगों का आगमन पहाड़िया लोगों के लिए एक खतरे का संकेत था। फिर संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुस चले आ रहे थे। क्योंकि संथालों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़िया लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और पीछे की ओर हटना पड़ा। पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे और इसके लिए वे कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल को पहाड़िया लोगों के जीवन का प्रतीक माना गया। इसके विपरीत संथाल खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे, अतः हल को उनकी शक्ति का प्रतीक माना गया। ठीक है, इसीलिए पहाड़िया लोगों और संथाल के मध्य की लड़ाई कुदाल और हल की लड़ाई थी, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। दामिन ई कोह 1780 के दशक के आसपास अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ियों के तलहटी में स्थायी कृषि करवाने का निर्णय लिया। जब ये पहाड़िया लोगों को झूम खेती छोड़कर स्थायी जीवन जीने के लिए समझाने में असफल रहे, तो उन्होंने संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। संथालों को इस दामिन ए कोह के इलाकों के भीतर ही रहना था और हल चलाकर खेती करनी थी। स्थायी किसान बनना था। पहाड़िया लोग मैदानों में रहने वाले किसानों पर आक्रमण करते थे, क्योंकि पहाड़िया लोगों द्वारा मैदानों पर आक्रमण विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में अपने आप को जीवित रखने के लिए किए जाते थे। इसके अतिरिक्त यह आक्रमण मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी शक्ति दिखाने का भी एक तरीका था। यह आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदारों को अक्सर उन पहाड़िया मुखिया को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। व्यापारी लोग भी उन पहाड़िया लोगों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करने के लिए उन्हें कुछ पत्थर दिया करते थे। जब ऐसा पत्थर पहाड़िया मुखिया को मिला जाता था, तो वह व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह आश्वासन देते थे कि अब कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। ठीक है, बुकानन की भारत यात्रा का वास्तविक उद्देश्य। बुकानन ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। इसकी यात्रा केवल भूदृश्यों से प्यार और
अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्सानवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। इसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि कंपनी को उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकान प्रत्यक्ष रूप से एकत्र करता था। बुकान को स्पष्ट रूप से हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। इस प्रकार बुकान की यात्रा का वास्तविक उद्देश्य कंपनी की वाणिज्य उद्देश्यों को पूरा करना था। फिर इसलिए बुकानन ने पत्थरों तथा चट्टानों और भूमि के विभिन्न स्तरों पर परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने लोहा खनिज और अभ्रक ग्रेनाइट तथा सॉल्ट पीटर से संबंधित स्थानों का पता लगाया। बुकानन ने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति को निरीक्षण किया। ठीक है। फिर जो 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये 5वीं रिपोर्ट क्या थी, देखिए। 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसमें भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन किया था। इस रिपोर्ट में 1002 पेज थे, जिसमें 800 से अधिक प्रश्न परिशिष्टियों के थे, जिनमें जमींदारों और रियायतों का प्रार्थना पत्र, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां सम्मिलित थी। ठीक है। फिर इसके बाद में जो थे 1760 के दशक में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के पश्चात इंग्लैंड में कंपनी के कार्यों की आलोचना शुरू हो गई। कुछ वर्ग कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार का विरोध करते थे। इंग्लैंड में रहने वाले बहुत से व्यापारी और राजनीतिक लोग इस बात से चलते थे कि बंगाल विजय का सारा लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है। वे इस लाभ में अपनी भागीदारी भी चाहते थे। इन कारणों के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के अंत दशकों में कई अधिनियम पारित किए गए, जिनके अंतर्गत कंपनियों को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करें। ठीक है। तो इस 5वीं रिपोर्ट को मतलब देखिए, पांचवी रिपोर्ट का एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के कामकाज पर ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। 5वीं रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे ग्रामीण बंगाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसको लिखने वाले पक्षपात रहित नहीं थे। वे कंपनियों के कार्यों के आलोचक थे। वे कंपनी की शक्ति को नियमित और नियंत्रित करना चाहते थे। अतः इस रिपोर्ट को बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें परंपरागत जमींदारों सत्ता के पतन का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया था। व्यवहार में जमींदारों का पतन बहुत कम हुआ था, क्योंकि जमींदार किसी न किसी प्रकार से अपनी जमींदारी बचाने में सफल हो जाते थे। जमींदारी की नीलामी होती थी, परंतु जमींदार नए नए तरीके अपनाकर अपनी जमींदारी बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में ही विस्थापित होते थे। ठीक है, ये कुछ मुद्दे थे इनके। फिर आपका जो ये सिलेबस है, कुछ ये सिलेबस हटा दिए गए हैं, ये देख लेना आप। Lesson 10, Colonialism and the Countryside Study of Government Records, page 257 to 274. Charles
valleys stabilized the istmraaree or permanent settlement of Jamidari system in Bengal in 1793. The East India Company took the following steps to control the power of the Jamidars. The army units of Jamidars are abolished, custom duty abolished, the powers of local justice and police were taken away from the Jamidars. The court of Jamidars was put under the control of the collector. After that, Jamidars were often unable to pay the revenue on the time due to the following reason. The initial demand were very high. This permanent settlement system was introduced in 1790 when the prices of agricultural produce were very low. His power was limited to the collection and management of revenue only. In case of no payment of revenue on time, the Jamidars was occasioned according to the sunset law, to avoid which they used the following methods. They used to get the Jamidar registered in the name of the women of the house. They used to manipulate auction through their agent. The lethals of the old Jamidar used to beat up the people of the new buyer or the old royat, did not allow outsider the pupil of the new buyer to enter the land. Thus, the new buyer could not get possession of the land. They willfully used to bid high and later refuse the buy. And then Jodhars were wealthy farmers who opposed the Jamidars. The Jodhars had more influence over the rural peasant as compared to the Jamidars. The fifth report was presented in the British Parliament in 1813 was commitment the functioning of the East India Company in India. The Paharia lived in the hill forest of Rajmahal and used to do jhum cultivation and gathering. They considered the wool regions as their private land. There was often conflict between the Paharias and the local people, and they used to attack the villages. The British tried to suppress them brutally, but they were not completely successful. The British collectors often used to give money to the chieftains of the Paharia people to maintain peace. Around 1780, the British started settling the Santhal tribes in Bengal, and the area of Santhals was called Damin-e-Koha. After that, the conflict between the Paharia and Santhals is called Battle of the Hoy and the Plug. Bookman had surveyed the area of the hill of the places and after this in 1855 and 56, the Santhals revolted against the British. Sindhu Manji, who was the leader of the Santhal rebellion. The reason for the rebellion of the Santhals were imposition of heavy taxes by the government on the land of the Santhals, charging high interest rates on the loan taken by the Santhals, taking possession of the land in case of no payment of loan. The Jodhar was a powerful figure in many areas of rural Bengal because till the earlier year of 19th century they had large tracts of land. Many of these were spread over thousands of acres. They also controlled the local trade and trade of moneylenders. In this way, they used to exercise extensive power of
power over the poor tenant of that area as well. A large part of land of the Jotdar was plugged by the sharecroppers. They used to give half of the produce after harvest to the Jotdar. Living in the village, the Jotdars exercised a direct control over the villagers, while the Jamidars live in the cities. The Jotdars were opposed to the increase in the village's Jama revenue by the Jamidars and prevent the Jamidari officer from performing their duties. He kept the riot dependent on him, united in his favor, and deliberately delayed payment of revenue of the Jamidar, resulting in the occasion of Jamidari, and often the Jotdars used to buy those land. This, in North Bengal, the Jotdar were more powerful than Jamidars. The Battle of Hui and Plug lasted very long. In the last decades of the 18th century, the British started clearing the forest of Rajmahal Hill as they wanted to increase their revenue by bringing the area under cultivation. The British also wanted to get the forest cleared because they considered the forest dwellers as rude, cruel, barbaric, and useless. In the 1770s, the British adopted the policy of eradicating the Paharia people living in the Rajmahal Hills. Later entrusted the Paharia chiefs with the responsibility of keeping the conduct of their people right, and by paying an annual allowance, but they could not get enough success in this. Under this circumstance, the Paharias continued to fight with outsiders to protect themselves from hostile military forces and went into the interior of the mountains and began to consider every white person as their enemy. The British started settling at the Santhals tribals at the foot of the Rajmahal Hill. The arrival of the Santhals people signaled a new danger for the Paharias people. The Santhals had been entering the area in large number of clearing the forest, cutting timbers, plugging the land, and growing rice and cotton. Since the Santhals had taken over the lower hills, the Paharias had to retreat further into the hills of Rajmahal. Paharia people used to do shifting, cultivation, and for this they used Hui. Therefore, the Hui was considered a symbol of the life of a Paharias people. On the contrary of the Santhals used plug for the cultivation, hence the plug was considered a symbol of their power. That is why the fight between the Paharias people and the Santhals was a battle of hue and plug which lasted for a long time. If you not subscribe our channel, do subscribe and press the notification bell for the latest update. Damin-e-Kohi, around the 1780s, the British decided to have permanent agriculture in the foothill of the Rajmahal Hills when they failed to convince the Paharias to give up jhum farming and live settled life. They made the Santhals ready to settle at the foothill of the Rajmahal by giving them land. By 1832, a fairly large area of land was demarcated as Damin-e-Kohi. This was declared to the Santhals land. The Santhals had to stay with the area of this Damin-e-Kohi and cultivated by plugging and become settled farm. The Paharia used to attack the farmer living in the plain because the invasions of the plains were carried out by the Paharias, especially to survive in the year of scarcity or famine. Apart from this attack was also a way of showing their power over the communities settled in the plains.
These invasions were also done to build their political relation with outsider. The zamindars living in the plain often had to buy peace from those Pahadiya chiefs by paying their regularly. The merchant people also used to give some toll to Pahadiya chief to use the road controlled by those hill people. When such tolls were paid to the Pahadiya chiefs, they protect the merchant and assure that no one would plunder their goods. And then the real purpose Bookman visited to India. Bookman was employees of the British East Indian Company. His travels were not only inspired by a love of the landscape and his search for the unknown. He used to travel everywhere with a large group of cartographers, surveyor, plain lifters, porters, etc. His travels were borne by the East Indian Company because the company needed to information that Bookman collected directly. Bookman was clearly instructed what to look for, what to search for, and what to write. Thus, the real purpose of Bookman's visit was to survey the company's commercial purpose. So Bookman looked carefully at the stones and rock and the different levels and layers of the land. He discovered iron minerals and sites related to mica, granites, saltpeter. Bookman meticulously oversaw local methods to salt making and cast iron extraction. I think the argument and evidence given in the fifth report cannot be accepted without criticism. The fifth report was tabled in the British Parliament in 1813. It described the administration and activities of the East India Company in the India. The report consists of 1002 pages, of which more than 800 pages were appendix, including application of jamindars and riots, reports of collectors of different districts, staticals, tables relating to revenue statements, and notes written by officer on the revenue and judicial administration of Bengals and Madras. It also included comments of the British official. After the stabilized of the East India Company's rules in India, 1760 criticism of the company's actions in England started. Some sections opposes the company's monopoly of trade with India and China. Many merchant paid political people living in England were jealous that the East India Company was getting all the benefit of the Bengal conquest. They also wanted to their share in profit. As a result of these reasons, several acts were passed in the last decades of 18th century under which the company was obliged to send its reports regularly on the administration of India. The fifth report was one such report prepared by a select committee. Based on this report, the working of the company was discussed in the British Parliament. The fifth report is an important source. It gives information about the events of rural Bengal. But this report cannot be considered completely true because the authors of it were not free from bias. They were critical of the company's occasion. They wanted to regulate and control the power of the company. Therefore, this report cannot be accepted without criticism because it described the decline of traditional jamindari power in a very exaggerated manner. In reality, the decline of jamindars was very less because the jamindars were able to save their jamindari in some way or the other. The jamindari was occasioned
auxiliary, but the Jamidars used to adopt new method to save their jamidari, and in very cases where that actually displaced. And over the chapter, and in this chapter, related syllabus is colonialism, and the countryside only pays 257 to 274 are relevant for the examination. You need to study page 275 to 86 for exam. You didn't know, you need not. And these are the topic for the exams related syllabus. And guys, please subscribe our channel if you not subscribed still, and also comment and like and share this video for your contacts and needy persons. And if you have any doubts and questions, you can comment us and also connect with us. Also press the notification bell. And thank you for watching this video. Thank you so much.